1. Confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. 2. Verdict, noun. फैसला, ज्यूरी का फैसला. A decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest. 3. Dismay, noun. मायूसी, नाउमीदी, खौफ ज़दा करना. Concern and distress caused by something unexpected. 4. Defiant, adjective. निडर, ढीठ, बेबाक. Showing defiance. 5. Fraught. भरा हुआ. Situation or course of action filled with something undesirable. 6. Fierce, adjective. संगदिली, खतरनाक, वहशी. Having or displaying an intense or ferocious aggressiveness. 7. Partisanship, noun. बेजा तरफदारी. Prejudice in favor of a particular cause, bias. 8. Searing, adjective. दागना, सेंकना, खुश्क करना. Extremely hot or intense. 9. Elusive, adjective. समझ से बाहर, दगाबाज, मुगालते में डालने वाला. Difficult to find, catch, or achieve. 10. Inimical, adjective. बेमुरवत, नामेहरबान, मुआनिदाना. Tending to obstruct or harm. 11. Transgression, noun. खिलाफ वर्जी, हुक्म उदूली, कानून तोड़ना. An act that goes against a law, rule, or code of conduct, an offense. 12. Erosion, noun. फरसूदगी, गिरावट, कटा, मिट जाना. The process of eroding or being eroded by wind, water, or other natural agents. 13. Cohesion, noun. रब्त, मिलाप, हमाहंगी. The action or fact of forming a united whole. 14. Turmoil, noun. अफरातफरी, खलबली, हलचल. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. 15. Virulent, adjective. जहरीला. Of a disease or poison, extremely severe or harmful in its effects. 16. Fraternity, noun. गिरो, फिरका, अंजुमन, बरादरी. A group of people sharing a common profession or interests. 17. Defiance, noun. नाफरमानी, इन्हिराफ, सरकशी. Open resistance, bold disobedience. 18. Entail. हकीकत पसंदाना. To have as part of a whole. 19. Fragile, adjective. नाजुक, कागजी, आसानी से टूट जाने वाला. Of an object, easily broken or damaged. 20. Ferocious, adjective. संगदिली, खतरनाक, वहशी. Savagely fierce, cruel, or violent. 21. Disquiet, verb. इस्तिराब, परेशान करना, बेचैन. Make someone worried or uneasy. The confrontation between the government and the Supreme Court has plunged the country into a more dangerous and unpredictable phase of the escalating political crisis. As widely expected, the SC ordered elections to the Punjab Assembly to be held on May 14, declaring unconstitutional and illegal the Election Commission's decision to postpone the polls to October. It also instructed the government to provide funds to the ECP and assure security for the provincial poll. The SC judgment upheld the constitution even if the procedure it adopted provoked controversy and criticism. The legal community generally welcomed the verdict while expressing dismay over the internal divisions exposed in the process. The ECP moved to execute the SC order by issuing an election schedule. But the ruling coalition rejected the verdict and vowed not to implement it. Prime Minister Shehbaz Sharif struck a defiant note in the National Assembly calling the judgment of murder of justice. The law minister warned it would worsen the political and constitutional crisis. PMLN called on the Chief Justice to resign. So did its alliance partner, PPP.
Heads of the ruling coalition declared the apex court's decision would be resisted in all forums including Parliament. The Assembly then adopted a resolution against the SC's ruling and urged the Prime Minister not to comply with it. It also asserted that provincial and general elections should be held at the same time. Since the Punjab and KP assemblies were dissolved by the opposition in January, the PDM government did all it could and deployed every alibi to avoid giving a date for elections. The ECP fixed October 8 as the date for the polls, which was then challenged in the apex court. Even before the ruling, Sharif and his ministers went on the offensive to subject the Chief Justice to pressure and insist on a full court bench to hear PTI's petition. With the government's declaration of non-compliance with the Supreme Court's decision, the two are set on a collision course. This compounds the political chaos in the country and the already fraught situation created by institutional clashes between the executive and presidency, between the SC and ECP, and now both the executive and legislature at loggerheads with the judiciary. All this is a consequence of the fierce power struggle between the PMLN-led coalition and Imran Khan. Their confrontation has turned these institutions into political battlegrounds. Political disputes have assumed the form of legal battles. Issues, including the election date, that should have been resolved by dialogue and mutual accommodation between political leaders, landed in courts, placing them under unprecedented pressure. And when courts gave their rulings, one or the other side accused them of bias and partisanship. A more dangerous and unpredictable phase of the escalating political crisis is unfolding. What does all of this mean for Pakistan's democracy? The political deadlock and breakdown of politics, when political disputes are no longer resolved by political means, have left democracy in a dysfunctional state. Democracy requires give and take, compromise and consensus to make it work. But when polarization and searing divides make this elusive if not impossible, democracy is undermined. Toxic politics and extreme intolerance has created an environment inimical to democracy and is eroding any semblance of a democratic culture. With PTI's unwise decision for its lawmakers to resign from the National Assembly, Parliament's lower house is oppositionless and has become dysfunctional as a result. Moreover, the ruling coalition has hardly used it for legislation in the public interest. Instead, it has become a vehicle for the government in its political war, and is now being used against the judiciary. The resolution rejecting the SC verdict and aggressive speeches denouncing it in the Assembly is testimony of this. All this has denuded Parliament of its real role in a democracy. The essence of democracy lies in strong institutions whose independence and decisions are respected by all political actors. But today, with state institutions in the vortex of the raging political conflict, they are increasingly riven by internal divisions, Supreme Court, with their decisions being contested. How differences among judges of the apex court play out may have lasting implications for its credibility. As for the ECP, which stepped beyond its mandate and committed a constitutional transgression, its role has made it the object of public controversy. If these institutions serve as the infrastructure of democracy, their erosion and lack of cohesion, for one reason or another, leaves democracy weakened. Polarization and political turmoil are taking their toll on the country's institutions and exposing them to the risk of breakdown. The government's intent now to undermine the SC's authority and legitimacy by its virulent attacks, refusal to abide by its decision and mobilize its supporters among the legal fraternity, will only undermine the rule of law, which is the bedrock of democracy. Equally, defiance of the law and constitution will push the country on the road to disorder and chaos, and eventually entail a political cost for the PDM parties. This conduct, the unremitting political maelstrom as well as standoff between the pillars of state, pose a rising threat to Pakistan's fragile democracy. The unmistakable signal it sends to the people who are struggling with a cost of living crisis in a deteriorating economic environment is that the political leadership is concerned more with power than public purpose. What is in progress is ferocious intra-elite competition that has little, if anything, to do with public needs or the public welfare.
A bigger crisis with unpredictable consequences seems inevitable with the PDM government refusing to implement the Supreme Court decision. This is unprecedented in the country's history. Growing public disquiet over the situation is reflected in an opinion poll conducted by the consultancy firm Iris Communications. This finds over 70% of respondents feel the country is going in the wrong direction. Meanwhile, Imran Khan has warned his supporters will take to the streets if the government doesn't comply with the judicial order. This promises more unrest and instability ahead with greater damage to democracy. It also risks reducing democracy to a mere shell shorn of substance. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, April 10, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तसादुम ने मुल्क को बढ़ते हुए सियासी बहरान के मजीद खतरनाक और गैर मुतवक्के मरहले में धकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने के फैसले को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने हुकूमत को ECP को फंड्स फराहम करने और सूबाई इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराने की भी हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आइन को बरकरार रखा, भले ही उसने जो तरीकाकार अपनाया था उसने तनाज़ा और तनखीद को जन्म दिया हो। कानूनी बरादरी ने आम तौर पर इस फैसले का खैर मुकद्दम किया और इस अमल में सामने आने वाली अंदरूनी तकसीम पर मायूसी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया, लेकिन हुक्मरां इत्तेहाद ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और उस पर अमल दरामद न करने का अहद किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में इस फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दिया। वजीर कानून ने मुतनब्बे किया कि इससे सियासी और आईनी बहरान मजीद खराब होगा। मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। इसी तरह इसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी ऐसा ही किया। हुक्मरां इत्तेहाद के सरबराहान ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पार्लियामेंट समेत तमाम फोरम्स पर मुज़ाहमत की जाएगी। इसके बाद असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की और वजीर आज़म पर जोर दिया कि वो इस पर अमल न करे। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि सूबाई और आम इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। जनवरी में अपोजिशन की जानिब से पंजाब और केपी की असेंबलियों को तहलील किए जाने के बाद से PDM हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख बताने से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। फैसले से पहले ही नवाज शरीफ और उनके वज़रा ने चीफ जस्टिस पर दबाव डालने और PTI की दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच पर जोर देने की कोशिश की थी। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने के ऐलान के साथ ही दोनों एक दूसरे से टकराने के रास्ते पर चल पड़े हैं। इससे मुल्क में सियासी अफरा-तफरी और इदारा जाती झड़पों की वजह से पैदा होने वाली पहले से ही कशीदा सूरत हाल पैदा होती है। एग्जीक्यूटिव और सदारत के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट और ECP के माबैन और अब एग्जीक्यूटिव और मुकन्निना दोनों अदलिया के साथ तनाज़ात का शिकार हैं। यह सब कुछ मुस्लिम लीग नून की क़ियादत वाले इत्तेहाद और इमरान खान के दरमियान इक़्तिदार की शदीद कशमकश का नतीजा है। उनके तसादुम ने इन इदारों को सियासी मैदान जंग में तब्दील कर दिया है। सियासी तनाज़ात ने कानूनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली है। इंतखाबात की तारीख समेत ऐसे मामलात जिन्हें सियासी रहनुमाओं के दरमियान बातचीत और बाहमी हम आहंगी के जरिए हल किया जाना चाहिए था, अदालतों में पहुंच गए, जिसकी वजह से उन पर गैर मामूली दबाव पड़ा। और जब अदालतों ने अपने फैसले दिए तो किसी न किसी फरीक ने उन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। बढ़ते हुए सियासी बहरान का एक ज्यादा खतरनाक और गैर मुतवक्के मरहला सामने आ रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इस सब का क्या मतलब है? सियासी तातुल और सियासत के टूटने ने, जब सियासी तनाज़ात अब सियासी तरीकों से हल नहीं होते हैं, जमहूरियत को एक नाकारा हालत में छोड़ दिया है।
जमहूरियत को अमली जामा पहनाने के लिए देने और लेने, समझौते और इत्तेफाक राय की जरूरत होती है। लेकिन जब पोलराइजेशन और बढ़ती हुई तकसीम इसे नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन बना देती है, तो जमहूरियत कमजोर हो जाती है। जहरीली सियासत और इंतहाई अदम रवादारी ने जमहूरियत के खिलाफ माहौल पैदा कर दिया है और जमहूरी सकाफत की किसी भी झलक को खत्म कर रहा है। पीटीआई की जानिब से अपने अरकान असेंबली के इस्तीफे देने के गैर दानिशमंदाना फैसले के बाद पार्लियामेंट का अवान ज़ेरी अपोजिशन से महरूम हो गया है और उसके नतीजे में ये गैर फाल हो गया है। इसके अलावा हुक्मरां इत्तेहाद ने उसे अवामी मुफाद में कानून साजी के लिए शायद ही इस्तेमाल किया हो। इसके बजाय ये सियासी जंग में हुकूमत का जरिया बन चुका है और अब उसे अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वाली करारदाद और असेंबली में उसकी मजम्मत करने वाली जारहाना तकारीर इसका सबूत है। इस सब ने पार्लियामेंट को जमहूरियत में उसके हकीकी किरदार से महरूम कर दिया है। जमहूरियत का जौहर मजबूत इदारों में मुज़मर है, जिनकी आज़ादी और फैसलों का तमाम सियासी किरदार एहतराम करते हैं। लेकिन आज जब रियासती इदारे सियासी कशमकश के भंवर में फंसे हुए हैं, तो उनके अंदरूनी इख्तलाफात सुप्रीम कोर्ट में तेजी से इजाफा हो रहा है और उनके फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान इख्तलाफात किस तरह होते हैं, इसके उसकी साख पर देरपा असरात मुरतब हो सकते हैं। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, जिसने अपने मैंडेट से तजावुज किया और आईनी खिलाफ वर्जी की, इसके किरदार ने इसे अवामी तनाज़ात का निशाना बना दिया है। अगर ये इदारे जमहूरियत के बुनियादी ढांचे के तौर पर काम करते हैं, तो उनका ज़वाल और हम आहंगी का फुकदान किसी न किसी वजह से जमहूरियत को कमज़ोर कर देता है। पोलराइजेशन और सियासी अफरातफरी मुल्क के इदारों पर अपना असर डाल रही है और उन्हें टूटने के खतरे से दो चार कर रही है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और कानूनी जवाज़ को कमज़ोर करने का इरादा, इसके फैसले पर अमल करने से इनकार और कानूनी बरादरी में अपने हामियों को मुतहर्रिक करने का इरादा सिर्फ कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाएगा, जो जमहूरियत की बुनियाद है। इसी तरह कानून और आइन की खिलाफ वर्जी मुल्क को इंतशार और अफरातफरी की राह पर धकेल देगी और बिलाखिर पीडीएम की जमातों को सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह तर्ज अमल, मुसलसल सियासी हलचल और रियासत के सतूनों के दरमियान तनाव पाकिस्तान की कमजोर जमहूरियत के लिए बढ़ता हुआ खतरा है। इससे इन लोगों को जो वाज़े इशारा मिलता है, जो बिगड़ते हुए माशी माहौल में जिंदगी गुजारने के अखराजात के बहरान से नबर्द आजमा हैं, वो ये है कि सियासी क़यादत को अवामी मकसद से ज्यादा इक़्तिदार की फिक्र है। जो कुछ चल रहा है वो अशराफिया के दरमियान सख्त मुकाबला है, जिसका अवामी ज़रूरियात अवामी फलाह व बहबूद से कोई लेना देना नहीं। पीडीएम हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकार के बाद गैर मुतवक्के नताइज के साथ एक बड़ा बहरान नागुज़ीर दिखाई देता है। मुल्क की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस सूरत हाल पर बढ़ती हुई अवामी बेचैनी की अक्कासी कंसल्टेंसी फर्म IRIS कम्युनिकेशंस की जानिब से कराए गए राय आमा के सर्वे से होती है। इससे पता चलता है कि 70% से ज्यादा जवाब दहिंदगान को लगता है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। दरियासना इमरान खान ने मुतनब्बे किया है कि अगर हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया तो उनके हामी सड़कों पर निकल आएंगे। इससे जमहूरियत को ज्यादा नुकसान पहुंचने के साथ मजीद बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का वादा किया गया है। इससे जमहूरियत को महज मादे के खौल तक महदूद करने का खतरा भी है। मजमून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक सफ़ीर हैं। अखज़ शदा बतारीख 10 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.